on and in. At, on, and in preposition of place. Can anybody make a sentence with at, on, and in? Hello? At, on, and in. Can anybody make a sentence? At, on, and in. At, preposition of place. I'm not talking about time. Hello? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बनाइए ना, जैसे at, on, and in place का के बारे में बताया था ना, तो at, on, and in टाइम के बारे में बताया था, तो at, on, and in place के बारे में कैसे यूज करेंगे उसको? Just like I live in Patna. ठीक है, I live in Patna, मतलब place के at का मतलब क्या होता है? You are standing at a place. He is at the gate. He is at the door. He is at his friend's place. तो place के बारे में बताया जा रहा है. तो अगर हम बोलेंगे he is in the room, room के अंदर है. तो prepositions का जो place का यूज होता है at particular place के पास. He is at the gate. किसका माइक्रोफोन ऑफ नहीं है? जैसे at का बनाइए पहले. At, preposition of place at. Hello? Anybody can start making up sentences. पहले से related. Place से related, हाँ. At, on, or in. Related to any kind of place. He is standing at the gate. He is standing at the gate. He is standing. He is at the office. तो कहीं पर है. He is at home. How will you make preposition of place at, on, and in? अब on पर के ऊपर on का यूज कहाँ करेंगे? My book is on the table. He is sitting on the chair. I am sleeping on the bed. I'm sleeping on the bed. On का मतलब क्या हुआ? ऊपर, के ऊपर. There's a difference between on and on to. अभी आप at, on, and in. And what is the difference between in and into? In और into में फर्क बताइए. The girl is in her room. The girl is in a room, which means that somebody is in the room. And when we say the girl is going into the room,
के अंदर into लग जाता है, it means there is some action going on. She is not in the room, but she is going into the room. Similarly, in and into, on and onto. And what is the difference between underneath and beneath? Underneath, below, underneath, नीचे. The cat is sleeping underneath the chair. My target word is at, on, and in. Can you please hurry up and make sentences with prepositions of place, at, on, in. In for a larger space and at for a smaller space. The best example is I live in Patna at Kankarpag. So in Patna, Patna is, Kankarpag is somewhere in Patna. He is working in Kerala. Yeah, he is working at. In ma'am, in Kerala. अगर किसी कंपनी में आप काम कर रहे हैं तो कौन सा preposition यूज करेंगे? He is working for, he is working at. At In ma'am. ma'am. He is working in. Huh? At ma'am. At. He is working at. Yes, he's working at. He's working for. He's working in. These days we are using all. At, for. The easiest exercise is talking about the directions, preposition of place. He went up, he went down. What is next? What is near? What is far? ये सब prepositions हैं. But if you know the basics like at, on, and in for place and at, on, and in for time. If you have grammar books, even if you do not have grammar books, there are a lot of exercises on Google. Yes, ma'am. Preposition के exercises जितने भी कर डालिए ना उतना कम है. Yes ma'am. Prepositional phrases, you will know कि which suits what. Suits what, ma'am? और exams में तो खैर prepositions are a major help if you know it. Otherwise, they can pull you down. There are so many exercises on prepositions. What is the meaning of adjacent? Adjacent. He's sitting next to me. He's sitting beside me. He's sitting adjacent to me. He's sitting across me. So the best way is like English is like grammar is like maths. Sit down with your system, log into any kind of exercise with showing prepositions, and start doing it. When you start reading sentences, you will know what is what, and this probably is the easiest way. So what you can do is, yes, any more questions that you have? Prepositions तो खैर अपनी जगह पे है, मैथ की तरह है, वो जितना करिएगा उतना it will be better with every exercise that you're going to take. Anything else in your mind, please ask. Ma'am, practice. क्या practice? Exam questions. Yes. Do you have questions? या विक्स कहीं पे मिल जाएगा मैम, ऑनलाइन कर लेंगे प्रैक्टिस.
चलिए ठीक है, कहीं तो मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस आपके पास हमेशा रहना चाहिए. Yes. चलिए, let us start some technical question answers. टेक्निकल क्वेश्चन आंसर का मतलब समझते हैं ना, कि क्वेश्चंस which you will be needing in your. Ma'am. Hello. Ma'am, difference between off and off, OF and OFF. Sorry, I'm sharing the screen. The difference between off and off, I was somehow muted, no? Yeah. So off means I'm talking about the most important goal of business communication is, what is it? And OFF means something which is off. My mood is off. Computers turned off. Band ho gaya. Hello, is the screen visible? Yes, ma'am. The most important goal of business communication. There you will see so many sentences with off. Organizational goodwill. Organizational goodwill. Ah, yes. Yes, ma'am. Most important goal of business communication is organizational goodwill, because we are not talking only about favorable relationship. We are not talking about receiver's response or receiver's understanding, but yes, we are talking about the most important goal of communication is organizational goodwill. मतलब इस तरह के sentences भी आ सकते हैं. You have to comment on that. MCQs तो रहता ही रहता है, but then you have to answer you have to elaborate. Can anybody elaborate this statement? The most important goal of business communication is organizational goodwill. Now see how important communication is. इसके बिना कुछ हो ही सकता नहीं है. Okay, downward communication flows from dash to dash. Upper to lower. Downward communication means from upper to lower. Yes, right answer. Lower to upper कब होता है? Upward communication में. Yes, what? Upward communication में. Upward communication. Upward communication हम कब लिखते हैं? जब हम कोई request लिख रहे होते हैं. When we are reporting, when we are giving something which is important, when we are writing an internal unsolicited proposal or solicited proposal we are writing, we are using this upward communication. And when do we write horizontal communication?
सेम लेवल पे मैम कम्युनिकेशन स्किल। जब आप सेम लेवल पर लिख रहे होते हैं तो हॉरिजॉन्टल होता है। डायगोनल कब होता है? इसमें कोई मीटिंग हो रहा है मैम, उसके बीच में डायरेक्ट किसी भी को लिख सकते हैं, किसी नहीं, पोजीशन के। डायगोनल मतलब होता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू कैन स्पीक टू एनीबॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशन। yes, आपका कम्युनिकेशन फ्लो फ्लो कहीं भी जा सकता है, अपर टू लोअर, लोअर टू अपर, इट कैन गो इन which flows in every direction. This already you have answered. The horizontal communication takes place between Employee with the same status. with the same status. Appeals and representations are used in appeals, representations. Haptic. Mhm. Haptic. No. Appeals and representations are used in what? Which communication? आंसर 5 का आंसर Hello? मैम क्वेश्चन नंबर 5 का बोल रहे हैं। Question number 4 पूछ रहे हैं आपसे। Sorry. Upward, ma'am. Upward, ma'am. somehow Upward. downward तो नहीं है वो, somehow it was an accident. Appeals and representations are used in upward communication. Okay. This is the right answer. Study of communication through touches. Haptics. Haptics. Can anybody explain this term haptics? क्या होता है ये? स्टडिंग बाय फीलिंग ऑन टचिंग, टच करके मैम। By yes. Haptics is the right answer. There is lots to be learned in technical communication. The formal greeting with which a business letter begins is called a the formal greeting with which a business letter begins is called hurry up. मैम सैल्यूटेशन ही होगा सर। हाँ yes, salutation ही है। The following is our non-verbal communication. Facial expression. Please read the question first and look at the answers. The following facial expressions, appearance, postures. Facial expressions. Anybody else any answer? This answer is wrong. देखो यहाँ we are talking about non-verbal communication. यस मैम अपीयरेंस हो सकता है कि मैम फुल्ली बॉडी लैंग्वेज की बात हो रही है। मतलब एक आंसर बताओ ना। मैम अपीयरेंस। Yes, what? बी, ऑप्शन बी मैम। B, appearance. यस। Anybody else any answer? All of the above, ma'am. यस सर। सौरभ कुमार बोल रहे all of them. Yes, ma'am. I think right answer है all of them. All of them कैसे prove करो इसको? Prove it. How the answer is all of them? मैम हमको लग रहा था फेशियल एक्सप्रेशंस बोले तो आपने गलत कर दी। इसके बाद सारा जो है वो बॉडी लैंग्वेज के You were not sure. फेशियल एक्सप्रेशंस लग रहा था लेकिन नहीं हुआ तो सब अब लग रहा है। नहीं ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा अभी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का मतलब होता है वो सारी चीजें जो तुम कह पाते हो बिना कुछ कहे। तो फेशियल एक्सप्रेशंस क्या है? कोई अगर मुस्कुरा रहा है तो हाँ द पर्सन इज हैप्पी। वो क्या कह रहा है? कह रहा है कि इज हैप्पी।
उसका अपीयरेंस, मतलब वो शादी में जा रहा है या पार्टी में जा रहा है या घर पे बैठा है या इंटरव्यू देने जा रहा है या सीमेज कॉलेज का स्टूडेंट है, कैसे मालूम पड़ता है वो सड़क पे जा रहा है? कैसे जानूंगा कि वो सीमेज कॉलेज का बच्चा है? ड्रेस में। यूनिफॉर्म। उसका वो बिना कुछ कहे वो बता रहा है कि he has got a CIMAGE bag and he is wearing a CIMAGE uniform, then he is saying that he is a CIMAGEan. अब पोस्ट है, वो कैसे बैठा है, कैसे खड़ा है, कैसे चल रहा है, वो भी बता रहा है, बहुत कुछ बता रहा है बिना कुछ कहे हुए। तो नेचुरली नॉर्मल कम्युनिकेशन भी कन्वे हो रहा है ना। So the answer will be all of them. Verbal means using words and non-verbal means no words. The handshake that conveys confidence is limp, firm, loose, or double. Yes? ऑप्शन नहीं डबल। क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे मैम। नहीं यार। अगर आप किसी से हैंडशेक कर रहे हैं तो वो भी बहुत कुछ कह देता है। अगर आप बहुत हल्के फुल्के से अपना हाथ बस, मतलब वो गाइड कर रहा है आपके हाथ को, आपका हाथ बस उसके हाथ में है, इफ योर हैंडशेक इज लाइक दैट, तो ये हो गया लिम्प। मतलब ठीक है, तुम कहीं भी मेरे हाथ को तुम ही गाइड कर रहे हो हमको। अगर फर्म है, सॉरी अगर लूज है, तो वो भी वही बात है। लिम्प है मतलब बीमार की तरह से ही, हाँ, यू नॉट इवन इंटरेस्टेड। लिम्प जैसे कि कोई लंगड़ा के चलता है उस तरह से। लूज का तो मतलब होता है कि आप बिल्कुल अपने आप को सौंप ही दिए, सरेंडर कर दिए, आपका कुछ से नहीं है, आपका कुछ पर्सनालिटी नहीं है, आपका कुछ बैकबोन नहीं है। एंड डबल मीन्स यू आर वेरी अग्रेसिव। कोई हैंडशेक करता है तो लगता है कि आपका हाथ ही तोड़ देगा, कस के दबाना, या जितना सोचे कस के दबाएंगे तो हम बहुत कॉन्फिडेंट दिखेंगे, उससे क्या होता है दैट यू आर अग्रेसिव। सो योर हैंडशेक शुड नेवर बी। Ma'am, answer is B. The answer is B, of course. Ma'am, answer is B, firm. Yes. The a firm handshake मतलब कि बिल्कुल that shows that you are confident. आप कभी किसी से भी हैंडशेक करोगे, it should never be limp. जैसे लूंज पूंज नहीं होना चाहिए, बहुत लूज नहीं होना चाहिए, डबल नहीं, अग्रेसिव नहीं होना चाहिए. It should be just firm. This speaks about your confidence. This is easy. Communication is the task of imparting, training, information, knowledge, message. Training is the task of imparting training, information, knowledge, or method, or message. Information मैम। इंफॉर्मेशन। Communication is the task of imparting. Yes. The following is the permanent record of business letters, ledgers, production reports, all of the above.
All of over. All of the above. यस मैम। How? तब हार्ड कॉपी में रहा था इसलिए मैम रिकॉर्ड। Letters also kept, ledgers also kept. So these are all things which are kept. The body of a letter is divided into, I think ये एग्जाम में आपका आ चुका है। 3 पार्ट में एग्जाम में आया था ना ये? I think I've seen फर्स्ट this सेमेस्टर में था सर। first semester में था ये। The body of a letter, but do not be fooled. In second semester, they can give you from anywhere from first semester to the second semester. Plus technical questions भी रहता है, आपको ये पता है। चलो, body of a letter is divided into 3 parts. That's true. When working to create and maintain a favorable relationship with the receiver, a sender should Use positive wording. यस Let's see. When working to create and maintain a favorable relationship with the receiver, a sender should do just what the receiver expects, impress the receiver by using the technical terms, stress mutual interests and benefits, use positive wording. पढ़ के एक बार फिर से देख लो, आंसर तो तुम्हारे सामने है। मेरा फाइनल है मैम, डी। डी? हाँ। Using positive words, of course. As per Newman and Summer, communication is the exchange of Newman and Summer. Opinion, ma'am. Opinion? No. ऑल ऑफ द अबव। All of the above. यस मैम। The dash body of the presentation should be broken into shorter and clear units. These are all from business letters. The main body. Main body, ma'am. Option A. The main body of the presentation should be broken into short and clear units. Right? Which of the following term that best describes the grapevine as a communication pattern? Diagonal, information, serial, verbal. ग्रेपवाइन में क्या होता है? अच्छा, ग्रेपवाइन किसी को पता है कि क्या होता है? No, ma'am. ग्रेपवाइन का मतलब होता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन इन एनी ऑफिस सेटअप। कोई फ्री टाइम में कैंटीन में बात कर लिया या कहीं अनऑफिशियल बात करना, ऑफिस में रह करके भी ऑफिशियल टॉक नहीं करना, दिस इज कॉल्ड ग्रेपवाइन। तो विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द ग्रेपवाइन एज अ कम्युनिकेशन पैटर्न? डायगोनल या वर्बल? Diagonal, informal, serial, verbal, what? No idea. मैम डायगोनल या वर्बल को ये थोड़ा ज्यादा चांस मैम। इनफॉर्मल मैंने बताया ना कि जो ऑफिशियल बात नहीं कर रहे होते हैं, then we are into grapevine. मैम इनफॉर्मल हम काहे बात करेंगे मैम, कुछ भी बात कर सकते हैं ना। क्यों? हम यहाँ सिमज में हम लोग बैठ रहे हैं, तो फैकल्टी पढ़ाते हैं आप लोगों को, सारे के सारे एकेडमिक टीम है, तो do we only take classes or during lunch time we sometimes we talk to each other? चलिए कल कैसा रहा, क्या बहुत ठंड हो रही है, ये सब जो बात होती है ना, दिस इज ग्रेपवाइन। मैम ये इनफॉर्मल
This is informal. जब हम सर से बात नहीं कर रहे होते हैं, जब ऑफिशियली कुछ बात नहीं कर रहे होते हैं, जब हम क्लास नहीं ले रहे होते हैं और आपस में जब यूं ही एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रेपवाइन. Any kind of informal talk. The following is the most effective ways of communication: verbal, non-verbal, written, all the above. All of the above, ma'am. all of the above ही होगा सारा. ठीक है. Wrong. मेरे ख्याल से तो सबसे सही है. वर्बल भी होना चाहिए, नॉन वर्बल भी होना चाहिए. It means whatever you're saying, your body language should match what you're saying. Written also should be there. Verbal is right answer. A. सब अभी नॉन वर्बल ही लोग. ठीक है. बिजनेस कम्युनिकेशन के बारे में बात हो रही है. रिटर्न को तो सबसे प्रायोरिटी देंगे ही लोग, बट मेरे ख्याल से दिस इज रॉन्ग. All the above, because most effective ways are verbal, very important, non-verbal उतने ही important है, और written उतना ही important है. ये बता रहे हैं कि written सबसे ज्यादा. No, I think the answer is wrong. What I feel is everything is important in a business communication. The most effective way, written अगर कह रहे हैं ये, तो what about the tone in the language? What about the facial expression? What about the body language? That is not seen in written communication. So all this is seen and heard. When you are able to see, when you are able to be heard, seen and heard, of course that makes effective communication. So yes, all the above. The dash of business letter is called layout. Pattern, ma'am. मैम पूरा लेटर के अंदर में क्या लिखे पैटर्न नहीं क्या होगा मैम. I said pattern ही wrong था. जिसको format करना, option format होना चाहिए था. यस मैम तब हो Format of business letter is called the layout. जो दिया है उसमें पैटर्न नहीं होगा. तो पैटर्न का मीनिंग है. Interaction between 3 to 12 people who share a common interest, common goal, a sense of commitment, and who attempt to influence one another is known as. ठीक है, पढ़ना इसको. Small group communication. एक बार फिर से पढ़ लो, क्वेश्चन थोड़ा लंबा है. डी वाला क्या है मैम? Rhetoric communication. इसका मतलब क्या होता है? आप बताओगे, you will tell me. You are taking the test, not me. का मतलब क्या होता है? मैम डी वाला. डी होगा. डी होगा. ये पहले मतलब बताओ ना, ऐसे नहीं होते. सौरभ को मतलब पता ही नहीं तो डी आंसर कैसे बता रहे हो तुम? तो मतलब नहीं पता इसलिए तो बता रहे हैं. पहले first thing first, you must know the first word. You must know the words. Rhetoric. किसी को नहीं पता है. The art of effective communication, the art of convincing communication. Rhetoric. You have to be rhetoric in your communication when you're working in an organization. ठीक है. Business communication, small group communication, personal communication, or rhetoric communication. Now what? Rhetorical communication. हाँ, तो जान ही गए ना. Convincing, persuasive communication,
कन्विंसिंग कम्युनिकेशन, कि आपकी बात को सुन करके कोई असर आपके फेवर में डिसीजन हो, दिस इज रेटरिक. When a group agrees to support and commit to the decision of the group they have reached. Yes, hello. If you do not know the meaning of these words, write them down. A, B, C, analysis, you know, solutions, you know. Senses, consensus. इसमें तो 2 नया वर्ड आ गया मैम. इसीलिए ना. Consensus. Write down the word. कंसेंसस हो सकता है मैम, जिसमें सारा एग्री हो जाता है, कितना फेवर है, मैं कितना. Answer यहाँ का तो consensus ही है. It means when two groups have come to an agreement, a general agreement. ठीक है. Please write this word down. Answer A ही है. It means a general agreement. Right. And the other word CENSUS. Please write that down. CENSUS. Census. मतलब कोई सर्वे हो रहा है, कोई अकाउंट हो रहा है, पॉपुलेशन का सर्वे हो रहा है, काउंट हो रहा है, सेंसस. कंफ्यूजिंग वर्ड्स भी आपका आ गया. कंसेंसस एंड सेंसस दोनों में डिफरेंस है. दोनों में डिफरेंस है ना. अग्रीमेंट पहला बार पहले में, एंड सेकंड में काउंटिंग ऑफ पॉपुलेशन काउंट और व्हाटएवर काउंट. Number 20. Do you have a class exactly at 11 o'clock? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. मैम Maths मोटिवेट. class है क्या? Hello, is it maths class? No, ma'am. Sad. System analysis and design. अभी शुक्ला सर सैड है मैम. 11 बजे से ही है. यस मैम. चलिए 10 minutes में. Goals help us to मोटिवेट मैम. let us be very quick. Goals help us to communicate, work, stress, motivate. आप motivate. What? Wrong answer है. सक्सेस मैम. अब सभी को देखना पड़ेगा. वर्क. फाइनल वर्क. Goals helps us to communicate. का टारगेट रहता है. मम्मी गोल कम्युनिकेट. हाँ, गोल रहेगा तब तो कम्युनिकेट कर पाएंगे ना. देयर हैज टू बी अ गोल, एंड गोल रहेगा तब कम्युनिकेट करेंगे. कोई चीज अचीव करना है. वैसे तो मैम गोल रहेगा तभी सक्सेस करेंगे या फिर मोटिवेट होंगे. गोल्स होगा तो हम तभी बात करेंगे, देन एक दूसरे को मोटिवेट भी करेंगे. अदरवाइज नॉट. मोटिवेट तो होना चाहिए था. लक्ष्य रहेगा पहले तब तो बात करेंगे, तब तो मोटिवेट करेंगे. पहले बात करेंगे, मोटिवेट पहले होता है. हाँ, पहले बात. ओके. 25 का टारगेट रहता है. एन इफेक्टिव ओरल प्रेजेंटेशन प्रोसेस फॉलोज व्हाट स्टेप्स. आपके सिलेबस में है प्रेजेंटेशन स्किल्स. एन इफेक्टिव ओरल प्रेजेंटेशन process follows how many steps?
5. I am clicking on whatever you're saying. 4, ma'am. A. Write this down. Oral presentation, the process follows 3 steps. Business letters produce immediate effect because they are interesting, brief, formal, and informal. Hurry up, don't waste it. मैम फॉर्मल नहीं. D. हाँ? ये भी रॉन्ग आंसर, ये भी रॉन्ग आंसर है. आंसर होगा B. How can business letters be informal? Wrong answer. Business letters produce immediate effect because they are brief. Set off the list to do and don'ts by using body, letterheads, bullets, and formal. Bullets, ma'am. ठीक है. The envelope indicated that there was dash, but in fact there was only a letter inside. मैम इनक्लोजर Yes, ma'am. A. मैम वो ब्रीफ कैसे हो जाएगा मैम उसमें हम फॉर्मल तरीके से मैम लिखते हैं बिजनेस लेटर को. आंसर बता रहा है इनफॉर्मल, वो तो रॉन्ग आंसर है ना. मैम Anyways, 25. Form letters are also known as circular letters, formal letters, bad news letters, persuasive letters. Form letters. Persuasive sales letter. Yes, very good. Persuasive sales letter. Fine. मैम हम लोग का मार्की हुए 11 बजे से. Oh, sorry. Then I'm finishing of the class. मैम अटेंडेंस ले लीजिए. उस दिन हम ज्वाइन नहीं कर पाए मैम 3 बजे जो बोली थी. आप give me your roll number then. मैम रोल नंबर 24. 24. मैम रोल 8 भी. मैम रोल 38 भी. 18 मैम. 6. Fine. मैम रोल 3 Ma'am, 90. 4. 14. 6 17. Roll number 5. All right, thank you.